औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the course of the international law, and the today's topic is international economic institutions. Nomenclature. This is the list for the institutions which we are going to read or cover in the today's lecture, inshallah. So let's start the lecture formally. The first institution is IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Introduction. Its headquarters are located at Washington, D.C., US. It is headed by the President of the World Bank. It was created in 1944 to help Europe rebuild after World War II. IBRD joins with IDA, International Development Association. We will discuss it later. Are fund for the poorest countries to form the World Bank. They says that our funds are for the poorest countries to form the World Bank. They work closely with all institutions of the World Bank group and the public and private sectors in developing countries to reduce poverty and build shared prosperity. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर है और गरीब ममालिक को फंड्स की फराहमी की जाती है ताकि तरक्की की हुसूल में वो भी शामिल हो सकें. Its members, the International Bank for Reconstruction and Development is a global development cooperative owned by 189 member countries as the largest development bank in the world. It supports the World Bank Group's mission by providing loans, guarantees, risk management products, and advisory services to middle income and credit worthy low income countries, as well as by coordinating responses to regional and global challenges. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के 189 अरकान ममालिक हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक समझा जाता है और इसका बुनियादी काम कर्ज़ाजात देना और ऐसी सहूलतें फ़राहम करना है जिससे कि औसत और निचली आमदनी के ममालिक इलाकाई और दुनिया की बुनियादों पर आने वाले चैलेंजेस का माशी तौर पर सामना कर सकें. Purpose.
The world's largest development bank, IBRD, provides financial products and policy advice to help countries reduce poverty and extend the benefits of sustainable growth to all of their people. इसका बुनियादी मकसद माली लिहाज से मुख्तलिफ पॉलिसी और स्कीमों को मुतारिफ करवाना है ताकि इसके मुताल्लिक तमाम मेंबर मुल्क एक पायदार माशी सेहत हासिल कर सकें और माशी तरक्की में भरपूर हिस्सा ले सकें. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी डिटेल्ड है. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा. इंशाल्लाह आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो कंप्लीट टॉपिक है वो इसमें कवर अप हो जाएगा. अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी इकनॉमिक टर्म्स आ रही हैं जो कि मैं अपने इकनॉमिक्स के लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. मैं कोशिश करूँगा कि उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में ज़्यादा आसानी रहे. स्ट्रेटजीज़: वी प्रोवाइड a combination of financial resources, knowledge and technical services. Our strategic advice help governments reform to improve services, encourage more private investment and innovate and share solutions. We partner with countries as challenges emerge and evolves through innovative financial products and a wide range of the global forums. IBRD अपने बारे में बता रहा है कि हम अपनी हिकमत अमली से हुकूमतों को वसाइल, इल्म और तकनीकी सर्विसेज भी फराहम करते हैं, तकनीकी खिदमात भी देते हैं. इसके अलावा ज़ाती सरमायाकारियों को भी यहाँ पर लाया जाता है और समझाया जाता है. हुकूमतों और मईशतों को आने वाले माली चैलेंजेस को बेहतर और नए तरीके से हल तलाश करने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनके फोरम्स अक्रॉस द वर्ल्ड मौजूद हैं. इसके बाद एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है IFC के नाम से, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये भी एक आलमी मालियाती इदारा है. इट इज़ अ ट्रीटी वेयर इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वर्ल्ड बैंक. गो कि ये एक मुआहदा है और इसका जो असल है वो आलमी बैंक है. दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड asset management service to encourage private sector development in less developed countries. जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके हवाले से सरमायाकारी, उनको माशी और माली मुशावरत और मौजूदा असासाजात की बेहतर तरीके से सरमायाकारी करना और उनसे मुनाफा हासिल करने के बारे में बताया जाता है. द IFC इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इज़ इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन वाशिंगटन DC in the United States.
It was formed in July 1956. It is headed by Executive Vice President and CEO. IDA, International Development Association. It was formed in 1960. Its parent organization is the World Bank. Its head office is situated at Washington, D.C. The number of its members are 174 countries. The International Development Association is an international financial institution, offers the concessional loans and grants to the world's poorest developing countries. باقی تفصیل تو آپ نے جان لی. اس ایسوسیشن کا بنیادی مقصد ارزان اور رعایتی شرح سود پر یا شرائط پر غریب ترین ترقی پذیر ممالک کو قرضہ جات کی فراہمی ہے. IMF, International Monetary Fund, is an international financial institution which was formed in 1944 but started work on 27th December 1945. Its headquarters is located in Washington, D.C. It is headed by Managing Director. Number of its members consisting of 190 countries. Its parent organization is United Nations. Its mission is working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. It plays a central role in the management of balance of payments, difficulties, and international financial crisis. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بنیادی کام یہ ہے کہ عالمی طور پر مالیاتی اسکیموں کو بہتر اور تیز تر کیا جائے، عالمی تجارت کو بڑھایا جائے، پائیدار کیا جائے، روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں، اس کے ساتھ معاشی ترقی کو پائیدار بنایا جائے اور دنیا بھر میں غربت کی کمی کے لیے کوششیں کی جائیں. IMF کا بنیادی مقصد بیلنس آف پیمنٹس میں آنے والی مشکلات کو اور اس کے علاوہ عالمی طور پر معاشی بحران کو کم کرنا ہے. بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے آلریڈی میرا لیکچر موجود ہے. The General Agreement on Tariffs and Trade, established in 30th October 1947, covers international trade in goods. It was a legal agreement minimizing barriers to international trade by eliminating or reducing quotas, tariffs, and subsidies while preserving significant regulations. The General Agreement on Tariff and Trade was intended to
boost economic recovery after World War II through reconstructing and liberalizing global trade. कोटा सिस्टम को कम करने के लिए और अशिया की तरसील और तिजारत को बढ़ाने के लिए जंग अज़ीम दोम के बाद इस मुआहदे को किया गया ताकि दुनिया माशी तौर पर, तिजारती तौर पर आगे बढ़ सके. The purpose of the General Agreement on Tariff and Trade was to make international trade easier, ताकि बैनुल-अक़वामी तिजारत को आसान बनाया जाए. The General Agreement on Tariff and Trade held 8 rounds in the total from April 1947 to December 1993, each with the significant achievements and outcomes. In 1995, the General Agreement on Tariff and Trade was absorbed into the World Trade Organization (WTO), which extended it. 1947 से 93 तक इसके 8 दौर चले और हर दौर अपनी जगह कामयाब था, मगर 1995 के बाद से लेकर अब तक इसको WTO में ज़म कर दिया गया है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट support developing countries to access the benefits of the globalized economy more fairly and effectively. It's headed by Secretary General. The first United Nations Conference on the Trade and Development was held in Geneva in 1964. बुनियादी तौर पर ये कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है ताकि आलमी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारत और मईशत के बेहतर और शफाफ और मौसर मौक़े फ़राहम किए जाएँ. गोल्स: comprehend options to address macro level development challenges. मैक्रो इकनॉमिक्स के हवाले से आने वाली जो नाहमवारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उनको कैसे हल किया जाए. अचीव बेनिफिशियल इंटीग्रेशन इनटू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, और आलमी तिजारत के दौरान कैसे बेहतर मुनाफा कमाया जाए. डाइवर्सिफाई इकोनॉमीज़ टू मेक देम लेस डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज़, और मईशतों को इस काबिल बना दिया जाए कि उनका अशिया पर इन्हिसार कम से कम रह जाए. लिमिट देयर एक्सपोजर टू फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी एंड डेट्स, और मईशतों में होने वाले माली उतार चढ़ाव को मुस्तहकम किया जाए और कर्ज़ाजात पर इन्हिसार कम से कम किया जाए. अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मेक इट मोर डेवलपमेंट फ्रेंडली, मईशत में सरमायाकारी का रुझान बढ़ाया जाए और तरक्की पसंद बनाया जाए मईशत को. इंक्रीज़ एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, और जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तकनीक्स हैं, उनको दरकार लाया जाए. प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस, कारोबार और कारोबार में नई टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करवाना, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए. हेल्प लोकल फर्म मूव अप वैल्यू चेन्स, और जो इलाकाई या कौमी सनतें हों उनको तरक्की देना, बढ़ाना. स्पीड अप द फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस
بارڈرز، امپورٹ اور ایکسپورٹس کو بڑھانا. موسٹلی جب ایکسپورٹس بڑھیں گی تو زیادہ فارن ایکسچینج کمایا جائے گا، تو اس کوالٹی کے گڈس پروڈیوس کرنا جو کہ اکراس دا بارڈرز جا سکے. پروٹیکٹ کنزیومرز فرام ابیوز، کوالٹی کی مینٹیننس اور گڈ کی کوالٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنا تاکہ اینڈ کنزیومر کو ریلائبل گڈ ملے، تبھی ایک اچھی اکانومی فلرش کر سکے گی، ڈیولپ ہو سکے گی وہاں پر. کرب ریگولیشنز دیٹ اسٹائفل کمپٹیشن، ایسے تمام ریگولیشنز کو، قوانین کو ہٹانا جو کہ کمپٹیشن کو ختم کرتے ہوں. مارکیٹ کمپٹیشن، فرم سپلائی، اس حوالے سے میرے آلریڈی لیکچرز موجود ہیں. اڈاپٹ ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ یوز نیچرل ریسورسز مور افیکٹولی ڈپینڈنگ اپان دی geographical conditions of the territories. They should consider their natural resources as a source of income اور اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کو بڑھانا. فار ایگزامپل ٹورزم ہو گیا، منرلز ہو گیا ایٹسٹرا، جو کہ اکانومی کے لیے ایک بہتر انویسٹمنٹ اور آن بیس آف انویسٹمنٹ ریونیو جنریشن اور پروفٹس کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ فارسٹ ہو گئے. بہت سارے ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جن میں فارسٹ نہیں ہوتے، تو ان کے فارنر ٹورسٹ باقاعدہ سے وہاں ان ملکوں میں آنا پسند کرتے ہیں. سو دس کین بی دی کاز آف generation of revenue. United Nations Development Program, it was established in 1966 by the General Assembly of the United Nations, works in 170 countries and territories to eradicate poverty and reduce inequality. It helps countries to develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional capabilities, and to build resilience to achieve the sustainable development. Its mission is to end poverty, build democratic governance, rule of law, and inclusive institutions. اس تنظیم کا کام غربت کا خاتمہ، ناہمواریوں کو ہٹانا، یکساں مواقع فراہم کرنا اور ترقی پذیر ممالک میں رہنماؤں کی اہلیت کو بڑھانا، شراکت داری اہلیتوں کو بڑھانا. اس کے علاوہ ادارہ جاتی اہلیت لانا اور ایک پائیدار معاشی ترقی کی ابھرنے کی قوت پیدا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جمہوری حکومتوں میں قانون کی بالادستی اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تنظیم کام کرتی ہے. The United Nations Commission on International Trade Law, it was established by the General Assembly in 17th December 1966. Its headquarters are situated in Vienna, Austria. It's headed by Director. It is a subsidiary body of the UN. The official function of the UNCITRAL is the modernization and harmonization of rules on the international business. The organization is responsible for helping to facilitate international trade and investment. اس تنظیم کا بنیادی کام عالمی تجارت کے حوالے سے قوانین کا مشاہدہ کرنا ہے اور دنیا کے مختلف تجارتی قوانین کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کرنا ہے تاکہ دنیا میں تجارتی
قوانین آسان ہوں اور تجارت کی جا سکے. The United Nations Commission on the International Trade Law plays a key role in developing that framework in pursuit of its mandate to further the progressive harmonization and modernization of the law of international trade. It is the core legal body of United Nations system in the field of the international trade law. بین الاقوامی تجارتی قوانین کے حوالے سے یہ ایک بنیادی تنظیم ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے حوالے سے جتنے بھی بین الاقوامی تجارتی قوانین ہیں ان کی ہم آہنگی کرنا اور ان کو نئے قوانین کے مطابق رکھنا تاکہ بین الاقوامی تجارت ہو سکے. بعد ایک دوسرا انسٹیٹیوشن ہے IFC کے نام سے دی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن از این انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ بھی ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے. اٹ از اے ٹریٹی ویئر اٹس پیرنٹ آرگنائزیشن از دا ورلڈ بینک. گو کہ یہ ایک معاہدہ ہے اور اس کا جو اصل ہے وہ عالمی بینک ہے. دیٹ آفرز انویسٹمنٹ ایڈوائزری اینڈ ایسٹ مینجمنٹ سروس ٹو انکریج پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ ان لیس ڈیولپڈ کنٹریز. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے حوالے سے سرمایہ کاری، ان کو معاشی اور مالی مشاورت اور موجودہ اثاثہ جات کی بہتر طریقے سے سرمایہ کاری کرنا اور ان سے منافع حاصل کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. The IFC is a member of the World Bank Group and its headquarter is in Washington DC. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے تمام ایسپیکٹس کو ایک ہی لیکچر میں کور کروں. گو کہ لیکچر لمبا ہو گیا ہے لیکن آپ کے لیے کافی فروٹفل ہوگا. اگر پھر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس رکھیں تاکہ آنے والے لیکچرز کے میسج الرٹس آپ کو ٹائملی ریسیو ہوتے رہے. انشاءاللہ کسی ایسے ہی انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.